नमस्कार मु डॉक्टर सुनील सरभंगिया आपण मन को स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल रे पिला माने आज वीडियो रे आमे पढिबा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमे ऑलरेडी पढि सारछि चैनल रे वीडियो अछि आपण माने जाई कि चेक कर दे पारिबे आज वीडियोटा वेरी इंटरेस्टिंग हबा को जाउछि काहे कि आमे जस्ट एक्सटेंशंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढिबा जोटा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा जेमिति कि पिला माने मु कहिछि आज आमे पढिबा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई right elasticity of supply को बुझिबा को हेले we need to understand a very simple concept called law of supply कौन कहू छी when price rises quantity supplied of the good also rises, right? There is a direct relationship between the price and supply. Direct relationship between price and supply, right? एटा कहूची कौन लॉ ऑफ सप्लाई এই ল অফ सप्लाई को टिके क्वांटिफाइंग फॉर्म रे हमें पढ़िबा सेटा को कहा जाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कौन सेटा को हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करबा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जहा को हमें आउट ना रे जानिछु प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ठीक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या कौन करछि इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी supplied changes to change in price to change in 1 unit of price right price रे 1 unit change हेले how much quantity supplied response करूची बा change होची सेही जिंस को हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रे पढ़ी था यार मेजरमेंट कौन हुए यह को केमिति मेजर करे आमे केमिति मेजर करबा कंप्यूटेशन बा मेजरमेंट या को हमें मेजरमेंट कहि परबा या को हमें मेजरमेंट बोली कि भी कहि परबा ठीक अछि कंप्यूटेशंस बा मेजरमेंट कौन कहू छी एक्जेक्टली द सेम कांसेप्ट जोटा हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे पढ़ी छे एई जगह रे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रे भी पढ़िबा कौन कहू छी परसेंटेज change in quantity supplied due to percentage change in price right या को हमें टेक्निकल फॉर्म रे लिखले केमती हबो सी हियर percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price या को हमें elasticity of supply right ES बा elasticity of supply बोली कि हमें कहि परिबा या को यदि हम मेजर करबा कोन हबो delta QS divided by QS into 100 divided by delta P by P into 100 राइट या को हमें ठीक फॉर्म रे लिखि देली कोन हो जिवो डेल्टा क्यूएस मु क्विकली सॉल्व करछि डिवाइडेड बाय क्यूएस इनटू पी बाय डेल्टा पी लाइक टर्म को हमें साइड रखिबा डेल्टा क्यूएस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इनटू पी ओवर क्यूएस एटा होछि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कौन elasticity of supply
price elasticity, right? I mean price सहित नहीं P सहित नहीं this is the price elasticity of supply, right? I'm going to example now. गोटे एग्जांपल नेबा चलते देखिबा सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क प्राइस इंक्रीज कला फ्रॉम 2.85 rupees to 2.85 rupees to 3.15 rupees, right? This is the original price, this is the new price increase kala. Quantity supplied also increases, price increase के लिए quantity supplied भी increase हो, increases from 9,000 to 11,000, right? Quantity supplied increases from 9,000 to 11,000. What is the elasticity, right? What is the elasticity of supply? See, percentage change in, percentage change in quantity supplied, percentage change in QS never quantity supplied, which is equal to how much? New quantity minus old quantity divided by old quantity into 100, right? Sorry, first आमे mid value नेबा, mid value एठी बाहर कर दोजी, mid value quantity रो mid value of quantity supplied is equal to 9,000 divided by 11,000 divided by how much? 2, which is equal to 10,000. This is our, what is that? This is our mid value. The mid value method mu already demand रे पढ़े देछि, एठी आसी जीवो mid value method 1,000 10,000, right? 10,000 into 100 एटा बाहरी जीवो डेटा, ठीक अछि? ओके, एबे हम देखिबा 11,000 to 9,000 गले हम पाखरे 9 10 11 2,000 रहिला divided by 10,000 into 100, right? This becomes your 5 20 equal to 20%. कितने रहेला 20%. Percentage change in quantity supply 20%, and एबे हमें देखिबा percentage change in price. Percentage change in price. Price रो mid value बाहर करिबा, mid value of price केते हे जिवो पिला माने 2.85 plus 3.11 divided by 2, which is equal to how much? 15, right? This would be your 3 plus 3 is equal to 6. 6 by 2 is equal to 3. 3 बाहरला mid price, तापर हम कौन करिबा percentage change बाहर करिबा. This is your 3.15 minus 2.85 divided by mid value 3 into 100, which is equal to how much? 0.15 0.30 divided by 3 into 100, 30 by, this become 30 by 3 is equal to 10. ठीक अछि? Elasticity कौन कहूची? Elasticity of supply कहूची percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, which is equal to percentage change in quantity supplied is how much? हमें एठी देखि दबा 20% और percentage change in price होची 10%. 20% divided by 10% is equal to 2. Elasticity of supply is 2. That means elasticity of supply is greater than 1. That is 2.
elastic. The supply is elastic. Supply is elastic. ठीक अच्छे पे एवं आम देखा चेष्टा करवा different supply curve and the elasticity. Different supply curve and their elasticity. आमे यही कॉन्सेप्ट को डिमांड रे भी पढ़ी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी ए जगह काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रे भी आमे पढ़ी पारिबा और डिफरेंट सप्लाई कर्व एंड देयर इलास्टिसिटी भी आमे कहि पारिबा. फास्ट होची कोन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. Perfectly elastic supply, right? Yes, elasticity of supply is equal to infinity. Perfectly elastic. The number point. Relatively elastic supply. इस जगह elasticity of supply is greater than 1, right? Unitary elasticity of supply. Right? Unitary elasticity of supply. This become elasticity of supply is equal to 1 habo. Right? 4 number point हम पढ़िबा. 4 number point कोन अछि? Relatively inelastic supply. Relatively inelastic supply. Elasticity of supply is less than 1 hour. Right? And finally 5 number point हमें पढ़िबा perfectly inelastic supply. Perfectly inelastic supply रे elasticity कौन हम ES is equal to 0 हम आपको आसले सब जिन बताऊँ. डोंट वरी. फास्ट आम देखा कौन इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. फास्ट आम देखा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. राइट? सी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कौन कहूँ? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई when there is a slightly change in price leads to infinite change in quantity supplied. Okay, a small change in price leads to infinity or infinite change in quantity supplied. Right? एक हम गोटे ग्राफ रे नेबा x axis 0 y axis. राइट? ए जगह हमें क्वांटिटी सप्लाइड नेबा ए जगह हमें प्राइस नेबा. राइट? सो सप्लाई कर्व कौन हम इलास्टिक हम. प्राइस टिके चेंज हेले भी क्वांटिटी सप्लाइड बहुत चेंज हम. Q1 Q2 Q3 प्राइस किसी चेंज होनी लिटिल चेंज होची किंतु क्वांटिटी सप्लाई रे बहु परिमाण चेंज होची. हियर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी. बुझेला? तापर हम देखिबा 2 नंबर कांसेप्ट. 2 नंबर कांसेप्ट कोन कहूची पिला माने रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई रे हम कोन देखिबा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई हमको कहूची पिला माने चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी supplied is greater than the change in
change in quantity supplied is greater than the change in price, right? या को आम कौन कहवा गोटे ग्राफ नहीं कि देखा सी here is the graph x y 0 এটা कौन हम फ्लाटर हम ठीक अच्छे प्राइस रे कम चेंज हम क्वांटिटी सप्लाई रे बेसी चेंज हम Q1 Q2 P1 P2 this is your supply curve right ये हम कौन देखुचे ES is greater than 1 बुझेगा इलास्टिक कर्व 3 नंबर पॉइंट आम देखा चेष्टा करवा 3 नंबर कौन अच्छी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई राइट यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रे कौन हम चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस रे समान चेंज हम सी द ग्राफ हियर x y 0 45 डिग्री लाइन आसीबो जेते प्राइस चेंज हो से क्वांटिटी चेंज हो Q1 Q2 P1 P2 right here elasticity of supply is equal to 1 right this is your S and S supply all right chain number point relatively inelastic supply relatively inelastic supply कौन हम केमती सेव नब पे एठी कौन हुए change in price is greater than change in quantity supplied right कौन हम supply curve steep हम supply curve steep हम this is the supply curve see quantity बहुत कम चेंज हम प्राइस बेसी चेंज हम see Q1 Q2 P1 P2 this is your supply curve is S all right एबे हमें देखिबा पिला माने ए जगह रे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वैल्यूटा केते हबो लेस देन 1 हबो राइट काहे कि क्वांटिटी सप्लाइड बहुत कम चेंज होची एठी x नेबा एठी y नेबा एठी 0 नेबा क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑल राइट 5 नंबर पॉइंट 5 नंबर कौन अच्छी परफेक्टली inelastic supply perfectly inelastic supply कौन कहूची no change in quantity supplied even if there is change in price change हेले भी quantity supplied रे किछि change हेबनी right see this is the graph x y 0 and this is the S supply curve price change हो जी P1 P2 P3 ए जगह में प्राइस नौ छे ए जगह में क्वांटिटी ऑलराइट इधर प्राइस चेंज हो छी yes from P1 to P2 P2 to P3 change हो छी quantity QS no change the quantity right no change in the quantity चलंतु एबे टिके देखिबा एप्लीकेशंस कौन applications of demand supply and elasticity
कौन देखा एप्लिकेशंस ऑफ डिमांड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ए जगह में दुईटा कॉन्सेप्ट पढ़ा कौन फार्मिंग वर्सेस फार्मर और 2 नंबर देखा ओपेक क्राइसिस कौन ओपेक ओपीईसी ओपेक क्राइसिस ठीक अच्छे ये दुईटा कॉन्सेप्ट पढ़ी आम देखा चेष्टा करवा डिमांड सप्लाई और इलास्टिसिटी केमिति काम करछि चलतु फास्ट देखा फार्मिंग वर्सेस फार्मर राइट फार्मिंग वर्सेस फार्मर कौन अच्छी लेट सपोज देयर इज गुड न्यूज फॉर फार्मिंग राइट गुड न्यूज फॉर फार्मिंग कौन हो पारे बेटर टेक्नोलॉजी हो पारे राइट बेटर टेक्नोलॉजी हो पारे किंबा गुड वेदर कंडीशन हो पारे यही सब जिन बेटर फॉर द कौन हो पारे फार्मिंग हो पारे यही जिनस हवा द्वारा देयर माइट बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ठीक अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करिवो और आउटपुट इंक्रीज करिवो ठीक अच्छे भल टेक्नोलॉजी है बा गुड वेदर कंडीशन है आउटपुट इंक्रीज कला बट यही सब जिनस यही गुड न्यूज माइट बी बैड न्यूज फॉर द फार्मर बैड न्यूज फॉर फार्मर केमिति पिला माने जेते बेले आउटपुट बढ़िबो सप्लाई बढ़ीगले कौन हम प्राइस फॉल करिवो राइट प्राइस फॉल करिवो चलतु यही कॉन्सेप्ट को आम टिके ग्राफ माध्यम देखा चेष्टा करवा सपोज एटा होची एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस यही जगह आम नवा आउटपुट यही जगह प्राइस दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व राइट डिमांड कर्व सप्लाई कर्व नेले अकॉर्डिंगली यही जगह आमर प्राइस फिक्स्ड है दिस इज आउटपुट क्यू ये जगह प्राइस इक्विलिब्रियम आम पाऊे यही जगह ठीक अच्छे सपोज गुड न्यूज फॉर फार्मर लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई राइट को शिफ्ट कला राइट सप्लाई राइट को शिफ्ट कला राइट S1 कौन है सी द प्राइस फॉल आउटपुट बढ़िला प्राइस फॉल कला Q1 ठीक अच्छे यहाँ को जब आम क्वांटिटेटिव फॉर्म रे नवा लेट सपोज यही जगह मु इरेज कर दूची प्राइस रो ना चेंज कर दूची क्यू रो ना चेंज कर दूची फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ठीक अच्छे क्यूटा एक जगह आम 100 नहीं जावा यही जगह आम नहीं जावा लेट सपोज 110 आसीगला ये जगह प्राइस थिला हमर 3 रुपीज तो 2 रुपीज हो गला एबे आम रेवेन्यू देखा कहीं बैड न्यूज फॉर द फार्मर से जिनस आम देखा चेष्टा करवा सपोज एट ई रे कौन हो प्राइस अच्छी 3 रुपीज आउटपुट अच्छी 100 पी इंटू क्यू इजिकल टू रेवेन्यू केते हो गला पिला माने 300 हो गला एबे E1 रे रेवेन्यू केते अच्छी 2 रुपीज इंटू 110 इजिकल टू केते हो गला 220 ठीक अच्छे एटा सप्लाई इंक्रीज है गुड न्यूज और द गुड वेदर कंडीशन हवा द्वारा सप्लाई इंक्रीज कला बट कौन है सप्लाई इंक्रीज कला किंतु प्राइस फॉल कला बा सप्लाई इंक्रीज करने द्वारा प्राइस फॉल कला और रेवेन्यू लॉस है फार्मर रो रेवेन्यू लॉस है ये जिनस आम देखुचे से तो कह जाऊँ गुड न्यूज फॉर फार्मिंग इज बैड न्यूज फॉर फार्मर गुड न्यूज फॉर फार्मिंग is bad news for farmer, right? So एबे सेकंड कॉन्सेप्ट के देखिबा पय चेष्टा करबा। सेकंड कॉन्सेप्ट कोन कहूची पिला माने? सेकंड कॉन्सेप्ट कहूची ओपेक क्राइसिस।
ओपेक क्राइसिस ओपेक माने कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री राइट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यही कॉन्सेप्ट हम केमती बुझिबा यही कॉन्सेप्ट को बुझिबा को हेले हमको इलास्टिसिटी रो दरकार पड़ता है सी इन द शॉर्ट रन ओपेक कंट्रीज कौन कले सप्लाई को कंट्रोल कले सप्लाई कमे देले डिमांड अच्छी सप्लाई कमी जावा द्वारा कौन होइछि प्राइस बढ़ी जाइछि ठीक अच्छी बट इन द लॉन्ग रन सप्लाई एडजस्ट हो जाइछि आ प्राइस नॉर्मल है कहीं पिला माने ड्यू टू सर्टेन इनसेंटिव्स शॉर्ट रन रे हुए तो आम गोटे मीटिंग करके डिसीजन नहीं कि सप्लाई को कंट्रोल कर देले बट देयर इज सम इंसेंटिव फॉर चीटिंग राइट इंसेंटिव फॉर चीटिंग करबा पाए इंसेंटिव मिलिबो कोन धरि ने जाऊ सप्लाई कंट्रोल हेची प्राइस बढ़ी जाइछि एक्स कंट्री भाबिबो अच्छा मु टिके काहाको न कहि कि सप्लाई बढ़े देले मोर रेवेन्यू बढ़ी जेबो वाई कंट्री भाबिबो चलन तो मु भी सेया करिबी जेड कंट्री कहबो चलन तो मु सेया करिबी तो सब कंट्री धीरे धीरे चीटिंग करबा स्टार्ट करिवे और लॉन्ग रन रे सप्लाईटा एज यूजुअल नॉर्मल हो जिवो एई कांसेप्ट को हमें ग्राफ माध्यम रे देखिबा कौन ग्राफ ओके सी दिस इज द शॉर्ट रन okay this is the demand curve this is the supply curve demand ए जगह हमें क्वांटिटी नहीं छे ए जगह प्राइस नहीं छे y एक्सिस x एक्सिस 0 राइट इक्विलिब्रियम प्राइस 80 डिटरमाइन है क्वांटिटी 80 डिटरमाइन है बट ओपेक कंट्री कौन कले शॉर्ट रन रे सप्लाई को कंट्रोल कर देले राइट शॉर्ट रन रे सप्लाई को कंट्रोल कर देले S1 प्राइस बढ़ी गला क्वांटिटी कमी गला बुझी गला प्राइस बढ़ीगला क्वांटिटी कमीगला किंतु लॉन्ग रन रे कौन है लॉन्ग रन रे कौन है सी लॉन्ग रन रे डिमांड कर्व टिके फ्लैटर हबो सप्लाई कर्व आल्सो अ फ्लैटर वन सप्लाई डिमांड आउ जदि भी किसी सप्लाई चेंज होउची तो कम परिमाण रे सप्लाई चेंज हबो S1 आगुरु आमे एई जगह रे इक्विलिब्रियम पाउथिले एबे एई जगह रे इक्विलिब्रियम पाउची दिस इज द क्वांटिटी वन न्यू क्वांटिटी एंड अकॉर्डिंगली हमरो P1 P ठीक अछि E1 E एबे देखो सप्लाई किसी परिमाण रे कंट्रोल हेची प्राइस एज यूजुअल पाखापाखि समान हेची एथि हम कोन देखो छी पिला माने प्राइस कम फॉल करिवो बा लॉन्ग रन रे इलास्टिसिटी कौन होची इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होची और शॉर्ट रन रे लेस देन 1 होची ठीक अछि ए ग्राफ रो हम कोन पढिले ए ग्राफ रो हम पढिले शॉर्ट रन रे हुए तो प्राइस एडजस्ट हेई पारे शॉर्ट रन रे हुए तो सप्लाई को कंट्रोल करके हमें प्राइस बढ़े दे पारिबा बट इन द लॉन्ग रन देयर इज मोर इंसेंटिव फॉर चीटिंग से जिनस कौन करिवो प्राइस को पुणी न्यूट्रल लेवल को आनिबो ओपेक क्राइसिस एथि पय हमें कहूचे बा ओपेक कंट्रीज माने जो इंटेंशन द्वारा प्राइस को बढ़ई थिले सप्लाई को कंट्रोल करथिले से इंटेंशन पूरा हेई पारिला नाही आ सेति पय ताको हमें ओपेक क्राइसिस कहूचे थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड वीडियो जदि भल लागी पिला माने वीडियो को लाइक कर देंतु चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु आ हां वीडियो को संग मान को सहित शेयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन कीप लर्निंग कीप